Good evening, Rajeshwari. Good evening, Pinaki sir. Yeah, how are you? Awesome, awesome. Good. Any specific progress? Yes, enjoying with you. Yeah, super. So internal representation we covered, Yes, we did. है ना? हमने कवर किया सिंपल reframing, हमने कवर किया how we learn, हमने कवर किया internal representation. Tell me, like you already know about whatever I'm sharing with all of you in this workshop. What is the difference you're noticing? Difference is the energy, the way you pass Mhm. to others. And to be very honest, when I did NLP practitioner with uh, Pawan sir, I was having busy schedule, so I couldn't understand that much, and I have not done any practice session with anyone. Mhm. So for me, it's an awesome opportunity to learn again from you. With the depth, I am understanding all these things. Wow. Super. So, and how much you want to share it with the world out there? अभी सिर्फ सीखने से चलाना नहीं, अभी सिर्फ जान रही हो, Yes, अंडरस्टैंडिंग हो रही yes, Pinaki. Actually, the thing is that with whom I am associated with my colleagues in the class, I can use with terms. I will not use with the kids because they are not aware with the terms. Some of the days I है. can use when they are free. But how to share it with my colleagues? When I start speaking some of the things, they think, अरे बाबा इतना ज्ञान नहीं दो, इतना पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे हम लोग. तो ये थोड़ा सा फिर मुझे लगता है some of the time I stop myself. Okay, let other whatever they think. Some of the time I just mind myself is there. ज्ञान कोई नहीं चाहता, इसलिए ज्ञान देना ही नहीं है. उनको खाली एम्पावर करना है, इनकरेज करना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, बस यही चार काम होते हैं. When you do that, at some point of time they will ask you, यार how you maintain so much of excitement, how you maintain so much of energy levels, how do you do that? तब खोलना है पत्ती, तब खोलना है. What is important is that you make sure that people are aware of, people are वो आपके पास आए ना, आप उन तक पहुंचो. Yesterday I was having a detailed discussion with Sumita. So I was telling her that, see, this in this book, the one we are reading right now, Master Your Time, Master Your Life, वहाँ पे Brian Tracy is talking about that we spend almost 3.5 hours every day on social media. तो मैंने सुमिता को बताया सिर्फ बताया नहीं, मैंने दिखाया अभी एग्जैक्टली कि वो जो 3.5 घंटा लोग सोशल मीडिया में दे रहे हैं, उन 3.5 घंटे में मैं कैसे आधा घंटा आपके लिए ऑक्यूपाई कर सकता हूँ. So I do all that thing. So I study, I make sure that how I can occupy 3.5 hours. Out of the 3.5 hours, half an hour of your time. 3.5 घंटा अगर आप इसमें दे रहे हो, व्हाट्सएप में दे रहे हो या सोशल मीडिया में कहीं पे भी आप दे रहे हो, तो उसमें से आधा घंटा आप मुझे दो. लेकिन मैं अगर आपसे मांगूंगा तो आप तो नहीं दोगे. व्हाट इज अदर वे अराउंड? रीच. You reach in different ways. You reach in terms of podcast. You reach in ऐसा करो जो लोग पसंद करते हैं. See, people love videos. People love moving objects. People love listening. तो पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए लिंक्डइन में आप कितना ही ब्लॉग लिखते हो, चांसेस आर वेरी लेस पीपल विल रीड. कभी कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उसमें कमेंट भी कर देता हूँ, but really I read.
मतलब मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा तो आई विल रीड अ बुक रादर देन रीडिंग अ ब्लॉग पोस्ट naturally. So when I think about it, then I think that means even if I write, it won't work. So what I can do in that case, मैं भी कभी ना कभी LinkedIn में लिखूंगा. जिस दिन मैं LinkedIn में लिखूंगा उस दिन I will connect it with one of my videos. I'll write and I'll say that you click on this link and watch the video. So मैं आपको 5 मिनट वो राइटिंग पढ़ के छोड़ने वाला नहीं हूँ. मैं आपको खींच के वीडियो में लेके आऊँ. And once you get addicted to my videos, then you stop reading my blogs. आप वो एडिक्शन में कैसे मेंटेन कर सकता हूँ उसको लेके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसको लेके मैं जानकारी. The topic that we are studying today is submodalities. क्या है submodalities? So everyone जिनको मैं जानता हूँ उनके दिमाग में पिनाकी नाम का एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है. उसका उन्होंने अलग अलग सब मोडालिटी ऐड करके रखे हैं. आई डोंट नो व्हाट सब मोडालिटीज यू हैव एडेड टू इट. सब मोडालिटीज क्या है? जो मोडालिटी है हमारे जो 5 इंद्रिय हैं, विजन, लिसनिंग, नोज, स्मेल एंड स्किन टच. इसके अलावा एनएलपी कहते हैं देयर इज अनदर सेंस व्हिच इज कॉल्ड सेंस ऑफ सेंसेस, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज सेंसेस बोलते हैं. वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट, वी कैन ओनली फील इट, है ना. तो ये जो 6 सेंसेस हो गए, दीज आर कॉल्ड मोडालिटीज. एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट वी रिमेंबर इन आवर माइंड, जिसको हम दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसको हम कैसे स्टोर करके रखते हैं, उसके साथ ये सारा हम ऐड करते हैं. वी ऐड ऑल दिस. उसका एक विजुअल एलिमेंट है, उसका एक ऑडिटरी एलिमेंट है, उसका एक फीलिंग वाला एलिमेंट है, काइनेस्थेटिक एलिमेंट है, कुछ कुछ में उसका टेस्ट का भी एलिमेंट है. एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग आम यस्टरडे, मैंगो. देन उसका स्मेल का भी एक वो है. देयर आर सर्टेन परफ्यूम्स दैट यू लाइक, देयर आर सर्टेन फ्लावर्स दैट यू लाइक. आपके बोकारो में तो डेफिनेटली आपके घर के आसपास बगीचा बगीचा होगा, वहाँ पे फूल आप लोग वहाँ पे कल्टीवेट करते हो, ये पौधा लगा दे, वो पौधा लगा दे, है ना, करते रहते हैं. तो उसके फिर खुशबू होती है. यू रिमेम्बर दैट, है ना. मोगरा फ्लावर होता है, होते हैं घर पे, मोगरा फूल लगाते हैं, देन शिवली फूल लगाते हैं, है ना. तो ये हो गया स्मेल वाला पार्ट. एंड देन कम्स द ऑडिटेड डिजिटल पार्ट, जो मेरा राइट रॉन्ग के साथ एसोसिएटेड है. तो उसका ये चीज राइट है, ये चीज रॉन्ग. माई ओन इंटरनल चैटर उस चीज के बारे में. और इन सब का कॉम्बिनेशन है मेरा वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन. वैसे आपका भी अपने बारे में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, उसके ये सारे सब मोडालिटीज. इफ यू क्लोज योर आईज, यू कैन विजुअलाइज हाउ यू नो, how like and as we talk about those different visual elements. जैसे सब मोडालिटी में हम बात करते हैं कि 3D है या 2D है, ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है, इज इट पैनोरामिक और इज इट फ्रेम, है ना, इज इट नियर और फार. ये सारा विजुअल एलिमेंट्स हो गए. देयर लॉट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स. देन देयर ऑडिटरी एलिमेंट्स, कि वहां पे आपको साउंड सुनाई दे रहा है. सो व्हेन यू थिंक अबाउट पिनाकी, आपको कितने विजुअल में बात करूं, मेरा जो साउंड है वो आप सुन रही है. वो उसका भी एक सब मोडालिटी बना हुआ है उस चित्र के साथ दिमाग में. मतलब थोड़ा थोड़ा हिंदी भी सीख रहा हूँ. Yeah, because I want to take it to common man. So I'm learning from this guy called Coach BSR. तो उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ. How he talks, how he walks, the kind of language patterns that he use. तो उसका मैंने क्या किया, 5,000 का कोर्स ले लिया, सेल्स ब्रह्मास्त्र. और उस 5,000 का कोर्स लेने के बाद वो काफी सारा कोर्स फ्री में दे रहा है. तो वो मुझे पता चल गया कि उसका ये सारे कोर्सेज फ्री होने वाला है. मैं अगर अपने इंटरेस्ट शो कर दूँ. So eventually what I did, I started studying him, and the way he talks was phenomenal. And he's taking all this technology to people at grassroots. तो उससे मैं इंस्पायर होकर मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोलना शुरू कर दिया. सो दैट इंटरनल रिप्रेजेंट, जो चित्र हम बना रहे हैं, उसमें साउंड का भी एक रोल है. तो आई नो, मुझे मालूम है कि जब राजेश्वरी बात करती है, आई नो दैट दिस इज राजेश्वरी स्टॉक. एटलीस्ट इफ इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनएलपी, हमारे ग्रुप में अगर आपका वॉइस नोट भी आ जाता है, मैं सुन के बता दूंगा, राजेश्वरी है, ये बीनल है, ये मानसी है, ये सुनीता है ना. सुबह तो सब लोग आ ही जाते, मैं तो सुबह पूरा
इनविजिबल मोड में रहता हूँ, देखता स्क्रीन तक देखता नहीं, तो सुबह एक बार देख लिया बस, देन आई कीप ऑन वॉकिंग, अपना पार्ट बोल के आई आई वॉक फास्ट एंड कीप ऑन लिस्निंग, है ना। तो ये हो गया उसका ऑडिटरी पार्ट। देन देयर आर फीलिंग्स पार्ट। फीलिंग्स पार्ट कैसे आते हैं, मान के चलिए आप, मैंने आपके साथ कोई पर्सनल बातें की, समथिंग वेरी क्लोज, यू जस्ट शेयर समथिंग विद मी, तो फीलिंग वाला सेंस आना शुरू हो गया, which constitutes that kinesthetic part. Now as long as we are not meeting each other, तब तक वो फीलिंग्स जो है वो सारा उसी लेवल का है, जस्ट दिस वाइब्रेशन। नाउ व्हेन आई एम मीटिंग समबडी, तो वाइब्रेशन बदल गया, है ना। मैं टच कर लिया तो वाइब्रेशन बदल गया, है ना। एंड एवरीबडी आई मीट, आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट आई टच दैट पर्सन, ठीक है, कैसे भी हो, ऑफ कोर्स मेंटेनिंग विद इन, कीपिंग माई सेल्फ इन माई विद इन लिमिट्स एंड विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ इंडिसेंसी। लेकिन उसका मेन पर्पस ये है कि वो वाइब्रेशन महसूस करना, एंड आई नो वंस आई डू दैट, एक वाइब्रेशन मेरे पास आ रहा है, एक वाइब्रेशन उनके पास भी जाता है, उस टच का एक वाइब्रेशन हमेशा जाता है ना। These are all getting added to your internal representation. These are all small submodalities. So submodalities play a huge role in neurolinguistic program. बहुत सारे चीज हम याद रखते हैं जस्ट विद दो सबमोडलिटीज। अभी जैसे मैं आपके वो देखता, अभी आप घूमने गई थी तो आप एक एक फोटो डालती हैं अपने उसमें स्टेटस में, एवरी टाइम वॉच दोस पिक्चर्स, उसके बैकग्राउंड में देखता हूँ, मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कैसे स्मेल आ रही होगी, है ना, वहां पे अगर धूप खिली है तो कैसे धूप होगी, है ना, आपने वो जो ड्रेस पहना है कैसे, what you may have thought about by choosing that dress, then your family, when I see your husband, तो मैं सोचता हूँ यार ये भी ऐसे ड्रेस पहना होगा, क्या सोचिए ड्रेस पहना होगा, क्या सोचिए ड्रेस खरीदा होगा, creating those connections. When I see your daughters, फोटोज देखता हूँ उनका, मैं तो अच्छा daughters इतने बड़े हैं, this is how they look. So sometimes I look for patterns of colors that are being used in a family. किसी कुछ फैमिली के पैटर्न्स होते हैं, वो यही कलर्स प्रेफर करते हैं, कभी 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 ऐसे भी देखा जाता है कि दे वियर द सेम कलर्स, तो दे डोंट नोटिस इट बट दे आर एक्चुअली डूइंग इट, है ना। तो दैट इज रैपो, रैपो बिल्ड हो चुका है, लेकिन आपने एक दूसरे में नोटिस नहीं किया। आज अगर आपने ब्लैक पहना तो वो भी ब्लैक पहन रही है ना, आपने यहाँ ब्लैक पहना तो वो शायद नीचे ब्लैक पहन रही है, या ब्लैक ये पहन लिया, इयर रिंग्स पहन लिया, हस्बैंड भी शायद ब्लैक कुछ पहन लिया, समथिंग। So when the whole family is there, ना कुछ ना कुछ होता है ऐसा, there is some common things that you can do. So observe those things, and if see the point is I am anyway observing it, मेरे आंखें तो ऑब्जर्व कर ही रहा है, उसमें से कितना इंफॉर्मेशन मैं कॉन्शियसली ले रहा हूँ, वहां पे एनएलपी काम करता है। अदरवाइज अनकॉन्शियसली तो सारी इंफॉर्मेशन आ ही रहा है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिलीट भी हो रहा है, which I don't need. Now what I am doing selective deletion, कि क्या डिलीट करूँ क्या डिलीट नहीं करूँ, है ना। इट्स लाइक राजेश्वरी जब सनग्लास पहनती है तो कैसे दिखती है, व्हाट टाइप ऑफ सनग्लास शी इज वेयरिंग, उसका भी एक डिजाइन है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर नाउ आई एम कॉन्शियसली डूइंग इट, कि क्या क्या डिलीट करना है क्या डिलीट नहीं करना। सो द मोर आई एम रिसीविंग दोस सिग्नल्स, आई एम एडिंग दैट टू माय सबमोडालिटी। अभी क्या कॉन्शियसली मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टार्ट डिस्कवरिंग दैट many things, this is not about just one person, ये तो आपसे मेरी बात हो रही है इसलिए मैं आपसे बात करूँ, but this is about everything। कोई इवेंट हो, कोई चीज हो, कुछ चीज, कोई दृश्य आपको दिख रहा है, या कोई वीडियो आपके पास आ गया, आपने उस वीडियो को खोल के देखा, नोटिस करना कि डू आई रियली नीड टू ओपन दिस वीडियो, देन व्हेन आई रीड अ बुक आई लिसन टू द ऑथर, मैं उस ऑथर का वीडियो ढूंढता हूँ, उस ऑथर ने उस टॉपिक के ऊपर कैसे बोला, अगर उसका कोई इंटरव्यू होता है तो वो ढूंढता हूँ, then I listen to that video, then listen to the authors, the way that author is talking about, then I connect, करे वो तो इस किताब में इसके बारे में लिखा है, इस किताब में इसके बारे में लिखा है, और देखो वही बातें करो। ऐसे करते करते आपको उस ऑथर का पैटर्न पता चल जाए कि वो यही बातों के घुमा फिरा के यूज करता है। एंड वंस यू डू दैट, देन दैट इज द सबमोडलिटी यू आर क्रिएटिंग। अभी क्या होगा, नाउ व्हेनेवर आई विल बी टॉकिंग अबाउट in any book program, any webinar, any workshop, if I take reference of Brian Tracy, automatically I will take the reference of that book, and then automatically I will say that this was written in that book.
तो उसने बोला कि आप दिन में 145 ईमेल्स देखते हो हर दिन ऑन एन एवरेज, है ना, कितना टाइम आप ईमेल में लगाते हो। दैट ही सजेस्टेड दैट सुबह जाके ईमेल मत देखने, एक बार ईमेल 11 बजे देखने, एक बार 3 बजे देखने, तो 3:30 बजे देखने। दैट इज मेंशन देयर, है ना। सो व्हेन आई प्रैक्टिस इट, अभी मैं किसी वर्कशॉप में जाऊंगा, मैं अगर खाली इतना ही बोलूंगा ना, उसका मैसेज क्या जाएगा, अरे पिनाकी जी कितना ध्यान से पढ़ते हैं एक एक किताब, है ना, ऐसे पढ़ते हो, माय गॉड, एक एक चीज ऐसे पढ़ते हैं। तो पिनाकी ने क्या किया, अपना सब मोडालिटी को थोड़ा सा और एक नया फीचर उसमें ऐड कर दिया, नया डायमेंशन ऐड कर दिया। तो यू हैव अ सब मोडालिटी अबाउट पिनाकी, उसने नया डायमेंशन ऐड कर दिया। एफएलडी में पिनाकी क्या करता है, कोई भी किताब आज तक तो उसने पढ़ के बोला नहीं, और जब भी बोलता है अगर टाइम मिले तो मैं बोलूंगा, टाइम मिले तो 5 मिनट बोलेगा, 5 मिनट में ऐसा कुछ बोल देगा, फिर लोग बोलेंगे थोड़ा और बताओ, है ना। बट ऑफन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट, इनिशियली मैं करता क्या था, 5 मिनट ही बोलता था, बोल के निकल आता था, अगर जे बस इतना ही मुझे आज बताना था, पूरा क्यूरियोसिटी जनरेट करके छोड़ दो। सो if it is happening with me, I can also do that. This is what I was talking about yesterday as manipulation. There is nothing wrong with the word manipulation. Manipulation क्या, आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, मतलब जो डेटा आप बाय डिफॉल्ट ले रहे हो, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। लाइक इवन इन दिस सेशन, you are picking up some data about the session, about me, about my background, or what the way I'm talking about, the t-shirt that I'm wearing right now, and the topic that I'm talking about, the kind of words that I'm using, the kind of intonation that I'm using, the way I'm using my facial expression, है ना, ये सब आप ऑब्जर्व करो, उसमें से कुछ कुछ चीज आप पिकअप करो। नाउ इफ आई वांट, आई कैन टेक कंट्रोल ऑन दैट आल्सो, पॉसिबल है। मैं आपको वही दिखाऊंगा जो मैं चाहता हूँ आप देखो, मैं आपको वही सुनाऊंगा जो मैं चाहता हूँ आप सुनो, आप ध्यान से सुनो। Many times what you and I do, we use metaphors, छोटा छोटा कहानी यूज कर to connect. I was talking to Bikash's daughter today, so she is 12 years. कल उससे बात नहीं हो पाई थी, तो हमने बोले आज 5 बजे बात कर लेते, फिर 5 बजे मेरा वो सेशन था, तो मैंने लिखा मैं 5:30 तक फ्री हो जाऊंगा, 5:30 में कॉल करता हूँ। 5:30 जब हम लोग फ्री हुए, तब देखा गया कि विकास सिंह के अभी तो आपने सेशन लिया, सारा दिन तो आप कुछ ना कुछ करते रहे, तो थोड़ा रेस्ट ले लो। मैं बोले यार बात करना तो अभी करते हैं, बिकॉज आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू टॉक अगेन और नॉट, आई रियली डोंट नो व्हेन आई विल गेट टाइम। कल हम बात नहीं कर पाए तो आज बात करते थे। द मोमेंट एज वी स्टार्टेड कनेक्टिंग, समथिंग हैपेंड विद देयर सिस्टम, एंड दे वर, विकास वाज फाइटिंग विद हिज सिस्टम्स फॉर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स, उसमें ऑडियो नहीं आ रहा है। Now he is fighting with mobile, fighting with tab, fighting with laptop. But throughout that time, I kept my session on. And eventually we connected. So as we connected, I started talking to her daughter. And the first thing which I asked her daughter, what is your favorite subject? And then I asked her, what is your not favorite subject? The subject which you really don't love to read. She said social, social. Social matra history. History is the only thing that nobody likes. I didn't like history. But how I generated interest in history. So there was a teacher who helped me. तो क्या है, हिस्ट्री का भी एक सब मोडालिटी मेरे दिमाग में है। उसका सब मोडालिटी ये कहता है कि ये बोरिंग है, एंड नाउ यू आर टॉकिंग टू 10 पीपल, सारे बच्चे बोल रहे हैं ये बोरिंग है। टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है शायद वो भी वैसे ही पढ़ा रही है, तो उसमें बोरिंग लग रहा है। आपने पहले ही मान लिया सब्जेक्ट बोरिंग है, दूसरा मान लिया ये टॉपिक भी बोरिंग है, तीसरा मान लिया कि पता नहीं ये टीचर क्या करती है। एंड नाउ इफ द टीचर इज नॉट एक्टिव इनफ टू टीच दैट सब्जेक्ट, फिर तो गया काम से। तो उसमें हाउ आई कैन क्रिएट अ न्यू स्ट्रक्चर, न्यू सब मोडालिटीज विद द टॉपिक हिस्ट्री। So added those new topic, new submodalities with history, and it was such that हम लोग बातों बातें ऐसा कर रहे थे हाई फाई। So she was also doing high five with me on camera. So कितने सारे सब मोडालिटीज पे मैंने काम किया उस पर। एक तो पिनाकी अंकल, पहली बार शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी मी, है ना, तो उसका एक सब मोडालिटी बन रहा था, आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑन दैट आल्सो। देन आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑन द सब मोडालिटी दैट
she has about that particular subject. I really do not know whether we're talking history or not. So somehow I have to set up a connection, conscious connection. As I set up that conscious connection, I created that. Abhi dekhe, what also I created for them. 20 minutes. So the message that gone is, पिनाकी जी का 20 मिनट हमने ले लिया, कुछ हुआ नहीं. I was only struggling with the system. And पिनाकी का 20 मिनट मतलब बहुत बड़ी बात है. It's a big thing. And on top of that, Pinaki didn't say anything. He is not even complaining about it. He is saying, नहीं आप कर लो. मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? I really can't say. अभी एक कॉल आ जाए तो मैं कॉल उठा लूंगा. अभी इसीलिए मैं स्क्रीन पे बैठा हूँ. So that I can give attention to you. और आज तो मैं समय दे के छोड़ू. कुछ भी नहीं होगा तो मैं मोबाइल पे ही बात करूँ. And it has to be a Zoom session. So all these things work. So क्या क्या सब मोडालिटी इसमें बन गया पिनाकी को लेकर. Whatever सब मोडालिटी उसका था वो तो था ही. उसके साथ और भी कितने सारे ऐड हो गए. So submodality is all about your perception about others and vice versa, their perception about you. अब NLP में हमारे पास एडवांटेज ये है कि as we learn from the difference between presupposition and assumption, कि किसी ने कुछ बोल दिया हमने उसी को ले लिया. Unless we had not been in NLP, हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ होता है. तो as we came into NLP, we discovered कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है और ऐसा ही है. So, and people are not their behavior. Every behavior has a positive intention. And whatever that other person is saying at any given point of time, the way he's behaving is that is his actual behavior. उस वक्त वो जैसे बिहेव करे वही असली बिहेवियर. हो सकता है वो झूठ बोल रहा है लेकिन बिहेव ऐसा करे कि जैसे सच बोल रहा है. तो as we learn all these things, हमारे पास अभी ऑप्शंस क्या है कि now we can handle things consciously. So I can create a submodality of anything, any person, any object as per my choice now. Otherwise, it was happening by default. And I can do the other way also. I can create my image in the other person's mind as I want. वो भी हम कर सकते हैं अपने शब्दों से. तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है विद NLP. So that's all about an introduction to submodality today. If you have any question, you can ask. The question I don't have, but clarity I got about the submodality. The modality I was understanding, but for the submodality I was having the problem. So today that means that vanished. Now the problem. I understood whatever the perception I had, and I can the vice versa the person is having about me, and I can keep the control on this submodalities. Uh, what I feel for any event, suppose that is going to happen, if I am, as I am telling about my own, tomorrow I will be going to some event, sports event for my DAB. I was not happy, but now that work is assigned to me. So now I'm adding the submodality with the student. I will sing with the this and that. I will take the pictures. I will enjoy this and more. It will be like a picnic. Now it's a burden for me. 250 students are there. Then also I'm trying to collect all the things. I'm making the pictures. I'm imagining this and that. In the bus we will sing. We will eat like this. We will sit like this. We will give a pose like this. Somehow I'm making creating that things in my mind so that I feel comfortable with the student. I should laugh, enjoy more. If it is a so I can by adding all these some modalities, we can make a event very creative, very beautiful for me, isn't it? Yeah. So thank you so much for that. So I often do when I don't want anything, but it has came. So I add some of the picture, images, colors in that so that I feel enjoy more. And because of that, people what the appreciation I get that you look very natural in everything, in the pictures, in the images. You look so beautiful. You look very calm, cool. Means you enjoy each and every moment. So it's true. I enjoy what I got. Not with a headache. I'm enjoying. I wrote my affirmation today also
that I'm enjoying this responsibility given my school. I'm very happy with my kids and all that. Yes. Wow. Mhm. Superb. And tomorrow, it may not be possible for me. Pinaki, I will win the bus. So then also Okay. I will try. And Saturday and Sunday. Sunday also I will be in the bus. Saturday I will be in the room school there. We So have on only Saturday session I on will be there. Friday, only weekday session. Okay. Saturday there won't be any session on Okay. Saturday as sir. Okay. लेकिन हाँ सैटरडे Friday. 11 बजे का सेशन होगा सुबह का जो हम सेशन करते हैं. Oh, so that I will be able to We can change join it. We because can change it. Yeah. We can because see अगर ज्यादा लोग नहीं आएंगे ना we will manage it. हम किसी और okay, टाइम पे कर sure. लेंगे. Saturday I will be there, so I don't have problem. I can join anytime because Yeah, I will. Saturday 11 o'clock we have a session जो हमारा 1 घंटे का सेशन होगा. Otherwise these will be half-an-hour sessions. So tomorrow there will be half-an-hour session again. If it is not at 7 we can work out suitable time. ऐसा कुछ नहीं चलेगा. लेकिन मिस नहीं होना चाहिए ये बहुत जरूरी है. So if you can delay because you have that who will cry also by 9 now. So how much you will delay? I will be traveling from 4:30 to 7:30. Who will cry में अभी तक कोई है नहीं. Nobody is there. Okay. What we can do once the FELD session is over, we can connect at 9:15 also. Okay, sure. Okay, we'll do that. Okay. So I'll put that message in the group that we are connecting at 9:15 tomorrow after Then it FELD. will be possible for me. Yeah. ठीक है ऐसे कर लेंगे. Okay. See अभी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है. बहुत कम participants हैं. And so इसमें क्या हो रहा है कि we are learning, we can actually explore more. हाँ वो बहुत बड़ा advantage है. मतलब you know like Jessica said that very interesting. She said कि आपके जितने प्रोग्राम है ना मैं चाहता हूँ मैं अकेली वहां पे रहूं. She means a very drastic change I found in Jessica. Now we are very good friends. She used to discuss whatever the things come in her mind. So when we start talking, it crossed 1.5 hours mostly. We connected thrice, and for 1.5 hours we used to talk. She used to tell me lots of things. Yes, and really she's very brave. What I feel, she's really brave, very prompt in speaking also, and the knowledge, the depth that she's having, she's really marvelous. Yeah. Good. I believe But she is watching all these recordings also because I'm putting it in the same group. okay. So I believe because if she hears it, then she will definitely come back to you Yes. saying that. Okay, sure. Cool. Okay. Okay, Rajeshwar. Okay, bye, God bless you. Pinaki. Bye-bye. Bye-bye. So here we go. 10, 4.